Guys, today I'm going to talk to you about a very basic and important skill which is going to bring a big change or a big difference in your speech, in your communication skills, in your fluency, and your confidence. Yes, today I'm going to talk about this thing called responding. Well, I'm going to explain this in a bit and it's very simple. But before that, hey there, I'm your communications coach and a soft skill trainer by profession, and I'm here to solve all your queries and all your problems related to communication skills. I'll help you to make your English better. I'll help you to make your English fluent. I'm here to make your English speaking confident. Yes. So stay tuned with me and watch all my videos. Give me a thumbs up, give me a like, share my videos so that it reaches maximum people and it benefits lots and lots more. Yes. On that note, I'm going to start with my video. So today I'm going to talk about responding. Now, what does responding means? So basically responding means, if you look up in a dictionary या फिर ऐसे भी आप जब सोचते हो कि responding मतलब क्या, जैसे जवाब देना. ओके, तो somebody, आप किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप रेस्पॉन्ड करते हो, आप आंसर करते हो, आप रेस्पॉन्ड करते हो, राइट आप उसको जवाब देते हो, आप जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ बोली गई है आपसे, आप उसके जवाब देते हो बेसिकली. सो दैट इज रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्डिंग मीन्स. नाउ where did this come from, and how this will benefit us in speaking English fluently and confidently? Well, I'm going to start with very basics. अब आप एक बच्चे को देखते हो जो छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना नहीं आता है, तो उससे जनरली लोग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, उससे पूछते हैं हाँ बेटा कैसे हो, क्या नाम है आपका, ये सब चीज़ें उससे पूछते हैं. They know that the person, the baby is not going to respond to them, he or she is not going to answer the questions, but still people जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे अरे कितना प्यारा बेबी है, क्या बेटा क्या नाम है आपका, या फिर क्या कर रहे हो आप. So these kind of things they ask, but the kid doesn't respond, right? वो कुछ जवाब नहीं देता है, but still people ask him this question. In the same way, ये हमारे this is the basics of communication. I'll tell you why. अब आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो. कोई भी कॉन्वर्जेशन हम जो स्टार्ट करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन. आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, अब जब ध्यान देने लगोगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड के व्हाई क्वेश्चंस आर सो इम्पॉर्टेंट. ओके, we usually tend to respond to questions. For example, आप सुबह सवेरे उठे, राइट आप फ्रेश होकर बाहर निकलते हो, आपकी मम्मी दिखती है, आपके डैडी दिखते हैं, आपके भाई बहन या जो भी आपके फैमिली में हो आपको दिखते हैं वो लोग. अब जाते हो तो मम्मी किचन में जनरली रहती है, तो आप जाकर के जो नमस्ते या वट एवर यू डू गुड मॉर्निंग या वट एवर यू ग्रीट इन योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन कल्चर, एंड देन यू आस्क के क्या बना रही हूँ मम्मी, या ब्रेकफास्ट में क्या है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आस्क योर मॉम, राइट. एंड देन शी रेस्पॉन्ड्स, अच्छा ये है वो, अच्छा चलो खा लो, अच्छा तुम खाओगे ना अभी, या कहाँ जाना है. सो देन थिंग्स स्टार्ट्स ऑफ, द कॉन्वर्जेशन स्टार्ट्स ऑफ. अगेन फॉर एग्जाम्पल, आपके डैडी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या चाय पी रहे हैं या वट एवर द पर्सन इज डूइंग, आप उनके पास जाते हो तो भी आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो उनसे, डैडी क्या चल रहा है, या आज न्यूज़ में क्या है, या चाय पी ली आपने, समथिंग यू आस्क फर्स्ट, then only the other person replies or responds to it. This is how any conversation starts. So now how it is related to our to us, or how it is related to us to speak English better and better and better every day. Now if you apply the same logic in your English speaking, it will work wonders, guys. Why? I'll tell you. If you start asking questions and you start replying or responding in English, how about that idea, right? That's what. I'll tell you how we can
take it ahead. Now, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए आसान कर रही हूँ, एंड देन आई विल गो टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड सिचुएशंस एज वेल. आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी ऑन दैट. बट बिफोर दैट, सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस. जैसे व्हाट से क्वेश्चन शुरू होते हैं, व्हेन से होता है, हाउ से होता है, व्हाट से होता है, वेयर से होता है, यू नो. सो दीज थिंग्स, इन सब से क्वेश्चन शुरू होते हैं. स्टार्ट नोटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप क्वेश्चंस. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिचुएशंस लेनी है. आप सिचुएशंस, जो भी आपके अराउंड सिचुएशन है, आप उसको ही एक रख लो. उसमें से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आप नोट डाउन करो, एंड देन स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस इन इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू द फर्स्ट एग्जाम्पल. लाइक एक सिचुएशन लेते हैं हम कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? अब आप उसके लिए क्या करो कि आप एक लिस्ट बना लो. यू कैन गो टू गूगल, यू कैन गो एनीवेयर, जहाँ भी आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको गूगल पे मिल रहे हैं, आपको कोई और वेबसाइट पे मिल रहे हैं, कोई और किसी चीज़ पे भी मिल रहे हैं, जहाँ से भी आप ले सकते हो. यू जॉट डाउन ऑल द क्वेश्चंस. ओके, एंड व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स टू इट. ओके, start writing the answers. This is the second thing. Now the third thing what you have to do, start practicing those answers. जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं, जो आंसर्स लिखे हैं आपने, थर्ड थिंग क्या है, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो. आप उसको बोलने की कोशिश करो. से इट आउट लाउडली, जोर से बोलो उसको, सो दैट यू नो इट गेट क्लियरर एंड क्लियर. आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके वर्ड्स, आपके आंसर्स जो वो थोड़े क्लियर होते जाएं. एक बार में थोड़ा अच्छा नहीं होगा, सेकंड टाइम आप ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो. मे बी लिखने में भी फर्स्ट टाइम आपके आंसर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, सेकंड टाइम आपको कुछ और आइडिया आएगा, थर्ड टाइम कुछ नया और आइडिया आएगा, एंड देन ग्रेजुअली आपको बहुत अच्छा सा आइडिया आ जाएगा. आप अच्छी स्क्रिप्ट लिख लोगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग आउट. ओके, फोर्थ थिंग व्हाट यू हैव टू डू. फोर्थ थिंग, जब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ चलो मैं लगभग बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ, आप मिरर के सामने जाओ. मिरर के सामने देख करके आप प्रैक्टिस करो उस आंसर को, सो दैट अब यहाँ पर क्या होगा, आप जब मिरर के सामने जाओगे तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा, राइट? उससे एक चीज़ तो ये होगी कि आपको लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो. There's somebody whom you're talking. You will look into the eyes and you will start speaking. So, वो फियर जो आप किसी और के सामने जाकर सामने अचानक से बात करने लगोगे, वो आपका फियर थोड़ा कम हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पर आप किसी को देख करके बात कर रहे हो, राइट? आप ऐसे रैंडमली हवा में बात नहीं कर रहे हो, या किसी इमेजिनरी क्रिएटर इंसान से बात नहीं कर रहे हो. यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, बट यू आर टॉकिंग टू समबडी सामने जो आपके खड़ा है. यू आर लुकिंग इन टू द आइज एंड टॉकिंग, राइट? आप अपने एक्सप्रेशंस देख पा रहे हो, अपने मूवमेंट्स देख पा रहे हो, आप अपने जेस्चर्स देख पा रहे हो. सो दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, ओके, एंड योर स्पीच एज वेल. तो ये 4 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करो. दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक और बेस ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस. ओके, चाहे आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, चाहे वो आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो, फॉर एनी लैंग्वेज, एनी कॉन्वर्जेशन, दिस इज द बेसिक और द बिल्डिंग ब्लॉक. गाइज, टेक इट वेरी सीरियसली. इट्स वेरी ईजी, कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है. आपके हाथ में है सब कुछ. आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे प्रैक्टिस कर सकते हो. आप ब्रश कर रहे हो सुबह, एक क्वेश्चन याद आ गया, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो. आप कभी और गए हो वॉशरूम, या शाम में, दोपहर में, जब भी कभी भी आप गए हो वॉशरूम, आपको कहीं बाहर जाना है, आप जाते हो, कोम वोम करते हो, यू मिरर के सामने खड़े हो, तैयार हो रहे हो, व्हाटएवर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वन आंसर. कोई ऐसा प्रैक्टिस आंसर क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. अरे आप उसी इंस्टेंस के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, उसी का आप कुछ प्रैक्टिस कर लो. अरे वेयर आर यू गोइंग, बस उस पर ही बोल दो आप कुछ वहाँ पर आंसर प्रिपेयर करके. I am going out for a party, I am going out with my friends, we are going out for a lunch, or probably in that party we'll have lunch, we'll have some fun activities, and then we'll meet people,
I'm going to meet somebody who I haven't met since long, and I'll also meet some people who have been working, so I'm going to talk to them about how their jobs are, and I can also, speak to them about the new technology which are in the industry, and how I can also grow in a new field. So probably you can build up that. आप कुछ भी बात कर सकते हो, आप किसी सिचुएशन को भी लेकर के आप क्वेश्चन बना करके आप उसका आंसर, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस द आंसर. नाउ दिस विल मेक यू वेरी, यू नो ऑटोमेटिक, एज आई कॉल. ना ऑटोमेटिक क्या, अब इससे क्या होगा कि आप हर सिचुएशन में जब आप क्वेश्चन बनाकर आंसर तैयार करने लगोगे, तो प्रॉब्ली आप थोड़ा स्टक करोगे, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी आंसर देने में, पर धीरे धीरे वो जब हैबिट बन जाएगी आपकी, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आप होने लगोगे उसमें. इतना कंफर्टेबल होते होते आप एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, ऑटोमेटिकली you can start generating those ideas and you can start explaining that in your words, right? So that is called automatic. तो आप automatic हो जाओगे फिर after a certain period of time. So guys, first things first, make this a habit. Make responding a habit, or to put it simply, you start developing questions and answers and start speaking about it and make this a habit. आप वैसे भी कोई भी कॉन्वर्जेशन करते हो, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, वो कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है, कोई कोई बंदा या बंदी रिप्लाई करता है, फिर कोई नया क्वेश्चन होता है, फिर कोई नई बातें होती है, राइट? ऐसे ही तो कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है, राइट? द सेम थिंग अप्लाइज हियर. आप वो हैबिट बना लो कि आपको भी, आप सबसे तो हिंदी में बात कर रहे हो या और कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप अपना एक टाइम बना लो कि आप उस टाइम पे अपने से ये प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में. सो मेक इट अ हैबिट फर्स्ट. एक बार वो हैबिट बन जाएगी तो फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड इट विल बी ऑटोमेटिक फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश. एंड इट्स नॉट अ बिग डील गाइज. एकदम कोई भी चीज़ आप, इट्स वेरी इजी. आप 10 मिनट भी डेडिकेट करोगे इसके लिए, और वो भी नहीं करो यार. आई टोल्ड यू कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, या कोई प्लान है आपका, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप एक दो क्वेश्चंस बना लो, उसके थोड़े आंसर्स प्रिपेयर कर लो एंड स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दैट्स इट. एक बार अच्छा नहीं होगा, दूसरे बार भी नहीं अच्छा होगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार तो अच्छा होगा, राइट? यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग कि आप कहीं जा रहे हो तो सुबह जाते वक्त आप अपना प्लान शेयर करो, अपने मिरर के सामने आप अपना प्लान शेयर करो, the whole day's plan. For example, I'll tell you, today I'll be going out with my friends, and I'm going to meet one of my friends, which is my childhood friend, and I haven't met her since ages, or I haven't met her since past 5-6 years. Now she has 2 kids, and I'm very excited to meet her because her kids are also coming with her. No, and we'll probably have lunch together, and I think I'm going to invite her over dinner, maybe tomorrow or day after tomorrow. I'll check with her, if she has time for tomorrow or day after tomorrow, and it will be good to meet her and her family, and probably she will be excited to meet my family as well. So I have those plans. Let's see what happens. That's it. Okay, when I'll come back, then I can again start telling about what had happened. Okay, how was my meeting with her and how was my interaction with her. So I can come back and I can again start saying, oh, it was lovely meeting her. I was so excited to meet her and her kids. Her kids were lovely. I just loved them. And she has never not changed at all. She, whatever, in my college days, however she was, she's still the same. And I'm so glad I met her. And she's ready to come over for dinner tomorrow. So I'm going to prepare a nice dinner
for her, and I think I am pretty much excited because I want her to meet my family, and I'll be meeting her husband as well. So yes, it will be a good get together. I'm looking forward to the event. That's all. So this is how you start practicing. Okay, so start making this a habit. This is going to help you a lot, guys. Now, coming back to the responding thing, so I'll give you some situations, like for example, I have come up with one situation and I'm going to um, bring some questions for you so that you can understand things better. So for example, the first situation is, if at all somebody is looking for is going to give a job interview. Okay, suppose I am going to give a job interview, so I am going to prepare for a job interview. So what should I do? So first thing first, what I'm going to do is I'll look out for some questions which are asked in a job interview. Okay, so I'll go to Google, I'll search on YouTube or any other source which I have. So I'll start searching those questions and I'll make a list of those questions. And probably you can start searching answers also, but I will suggest that you try to make your own answers, because every situation, everybody and everything are different. So if you come up with something on your own, that will be better, but you can take ideas from other things as well, the answers as well, so that's fine in the first attempt. So I'll start coming up with a set of questions, and then I'll start writing answers, and then I'll start practicing those answers. Now, for example, I'll come up with a few questions for you just to show how it goes. So the first question will be, introduce yourself. Okay, the second question might be, why are you looking for this job opportunity? The third question might be, why you have chosen this field. Okay, fourth question will be, how do you see yourself 5 years down the line? Okay, and the fifth question might be, why do you want to join us? Okay, so these are 5 questions which probably the interviewer can ask, or they generally ask these questions. So these are 5 questions. You can prepare n number of questions, that's fine. Now suppose, or if somebody asks me, introduce yourself, then I might say, oh well, my name is this. I have 10 plus years of experience into HR. I have worked into HR and majorly into recruitments, core HR, training and development, and all other aspects of HR as well. So I have a family. I'll tell about my family background as well. My family is from this place, and I have how many brothers and sisters I have, and then what they do, I can say that. Then I can come to my interests as well. So I like playing cricket, or I like playing badminton, or I like playing tennis, and I like reading books, I like going out on vacations, so that I can tell about my interests. Or I can say about my future plans also, like I want to grow in this field, I want to help the company to grow, I want to add to the growth of the company, and I feel that this opportunity is the best for me to learn and grow in this field. So this is something which I can say. Okay, coming to the second question, why are you interested in this job? Okay, then also I can say, I feel that this job is something which I have already done before. So I have experience in this field, or in this field, and I want to explore more, add my experience and add my knowledge to the company's growth and the profile's growth, and add new experiences in my profile. So this is what I can, same way I can prepare the answers and I can start giving out the answers also. Okay, so this is how we can do. So this is something which probably, if we practice this when we go for an interview, of course, if you get the similar questions, it's well and good, you can answer it confidently and fluently. If you don't get those questions also, you will get the questions, somewhat similar questions you will get. So you'll get an idea, okay, the person is trying to ask this, so you can relate to your questions, and then you can answer. So probably it will not be a bad interview or a very good interview, probably it will be in between.
So that is why you have to you can prepare in advance and go for the interview. That is the best or the safest thing you can do, okay, to be fluent and confident. So this is how you build up your confidence and your fluency. The second one is which career or stream or education we can choose. Okay, now in this thing we can have a long list of questions also. Okay, and then we can start answering those questions as per our convenience, and then when we get the answers, we'll definitely come to a conclusion also, like what stream to choose or which stream is better for us to choose, for our education or for our career. So the first question you can ask is, what are the streams which are available, or what are the career options which are available for us? Okay, now in this case you can go to again Google and find out what are career options are available and what all education or stream options are available which we can get into, like we can get into engineering, we can get into medical, we can get into design, we can get into arts, or basically commerce or arts or design or any other field, whichever field we like to, okay, research or something else. So this is a question which we can get answers to. Okay, now you can list down those available options and you can just start discussing, okay, this stream, okay, fine, this is good, or this is not good for me, or this is okay, I'm not interested in this, I am pretty much interested in this. Then you can jot down. The second question is, which stream suits me, or which available option suits me the best. Whether it is a career or education, you can again find out by asking more and more questions, that which stream or which education or which career suits you best, why it suits you and why it doesn't suit you, what are the advantages of this and what are the disadvantages of this. So you can start with those questions again. The third question is, how will the stream, education or career will help me to plan my future or to grow my career, or of course help me in my making my future or have a successful future. So you can again start discussing about those streams, that how it will help you to make your career, or help you to make big in your career or help you with your future. Okay, so start questioning, start coming up with questions and answers and start discussing. So these situations, I have two situations I've explained you and I've come up with those questions. You can come up with any situation and n number of questions every single day and you can start practicing the answers. छोटी छोटी चीज़ें आप पूछ सकते हो. For example, why do you like your hometown? Okay, or which city in India you like most, or probably which game you enjoy, or where do you want to go on a vacation, or which is your favorite celebrity, and which serial or talk show or movie you like the most. Can you please describe it a bit? Okay, and so this is something which will really help you. If you start asking questions, you have to start answering them as well. So start making it a habit of asking questions and answering them on your own. Okay, this will benefit you because it will be random for you. Any situation, anywhere, you can start asking questions, come up with questions and start answering your questions. It will really automate your speech. Okay, you will be that habitual that whenever somebody asks you a question, instead of you asking a question to yourself and answering, if somebody in return asks you a questions, you will automatically reply to that person. Trust me guys, if you start practicing this, making a habit of starting, asking questions and responding to it, this will really do wonders for you. See you. Bye-bye.